Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. अभी तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ बट वन लॉन्ग फॉर्म वीडियो फॉर अ वीक इन अ वीक इज़ अ मस्ट एंड इट विल कीप कमिंग फॉर श्योर. किस टॉपिक पे बात करेंगे? सो वैलेंटाइन वीक है, प्यार का महीना चल रहा है, सो आई थॉट लेट्स शूट सम कंटेंट ऑन लव. It is one of my most favorite topic because I absolutely enjoy talking about love. So what things I will cover in this video? बेसिकली पहले तो मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ माई टेक ऑन लव. मैंने कहाँ से सीखा अबाउट लव. Then I'll share my part of story, my side of story. I've been into a relationship and went through a breakup, so I will share ki what all I learned from it and how was it. And it's been 6 years. I was in a 4.5 year relationship and now it's been 6 years that it's over. So I will also like to share that how does it feel now and what went through. And in the end बस कुछ और बातें करे लेंगे लाफ पे, because this is going to be a big video, I guess. Not one of the biggest, but yeah, it will be a huge video. So firstly start करते हैं what is my take on the concept called love. So of course my take on love has always been like very simple. It has just got stronger and stronger with time. And I feel प्यार से ज़्यादा पावरफुल ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ होगा कभी ज़िंदगी में. प्यार से ज़्यादा पावरफुल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती है. एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील एवरी वन शुड एक्सपीरियंस द मैजिक कॉल्ड लव इन देयर लाइफ. येस, सो फॉर मी लव इज़ बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और miraculous है. मतलब it is like magic when you are in love kind of thing. And it is just the one of the best feeling you can experience in your life. So you should always be ready for it and you should not shy away from it कि हो सकता है कुछ हो जाए आगे जाके, but you should not shy away from it. You should feel that love, you should experience it, because इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसेप्ट कुछ है ही नहीं अपने लिए ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए. अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से सीखा या समझा अबाउट लव एंड ऑल दोज थिंग्स. तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियली वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव लर्नड लव फ्रॉम माई मॉम एंड डैड. मतलब ऑफकोर्स उन्होंने बैठ के नहीं सिखाया. दिस इज नॉट वॉट हैपन्स इन आर इंडियन फैमिली, राइट? But I have observed them. I have learned from them the art of love. I've learned from them that how important the concept of respect and selflessness is in, which is very important to ensure that जो love है, जो relation है, वो बहुत लंबा sustainable रहे. आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देम कि इससे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा पावरफुल फोर्स एक्चुअली कुछ नहीं है दुनिया में. एंड आई जस्ट केप्ट ऑब्जर्विंग देम एंड आई फेल्ट लाइक, man, this is something different. And I have so many times told in my video that I am blessed. मतलब considering my mom's health, if I got 20 years and some 6 months with her, it is just purely because the way dad loved her, took care of her, protected her, and just made her the number one priority in his life. And I keep telling to myself, or I have told in videos कि डैड जैसे पर्सन अगर मॉम को नहीं मिलते तो आई एम वेरी श्योर शी वुडंट हैव सर्वाइव्ड फॉर दोज मेनी ईयर्स, बिकॉज ही वॉज जस्ट brilliant. He was just absolutely selfless and he just put mom above every time, didn't care about what is happening with him, what is bothering him. Just mom was at the top priority and he was just selfless all throughout his life. And
दैट इज़ वेयर फ्रॉम वेयर जहाँ से मैंने प्यार सीखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि प्यार इतना पावरफुल है। बिकॉज अगर डैड नहीं होते तो आई एम वेरी श्योर कि मॉम इतना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती। सो हेड्स ऑफ टू यू डैड, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ना एक ओल्ड स्कूल लवर हूँ। बिकॉज हमने मैंने जो इनके बॉन्ड में, इनके प्यार में जितनी भी चीज़ देखी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स। वी हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, financial challenges, tons of problems, tons and tons of problems, but they kept showing up every day. They kept fighting. They were not in that zone of why us. They just didn't had that victim wala mentality, and they just kept fighting for each other, for me. And I guess that was very beautiful. They had everything around them so hard, yet they managed to be the best people, the best couple around. It was just amazing, amazing. And that is the reason I believe that इससे ज़्यादा powerful, इससे ज़्यादा beautiful, इससे ज़्यादा magical concept exist कर ही नहीं सकता लाइफ में। एंड आई एम एंड आई विल ऑलवेज बी अ ओल्ड स्कूल लवर। हमें सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स वही समझता है, उसी पे हम पिघल जाते हैं। ग्रैंड जेस्चर्स आर समथिंग विच हैव नेवर ड्रिवन मी, विच विल नेवर ड्राइव मी, एंड आई जस्ट डोंट गेट एक्साइटेड। वो छोटी सी एफर्ट्स, छोटी सी केयरिंग, छोटा सा प्रायोरिटाइज करना, दैट इज़ ऑल विच which are some of the things which can seal the deal for me. अब I like to share my side of the story, how I was, how I went into a relationship, and how it all got over. And this is going to be a bit personal, but I'm sure that I'm not going to, uh, break my limits or say something which I shouldn't be saying. So I think I'll be very careful about it, but I can ensure one thing, that it'll be a no filter, a candid video. अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। Looking at them making love look so beautiful, so amazing, so powerful, of course, I also wanted to feel that feeling. I also wanted to enjoy those emotions. I also wanted to, have a person who I can just love absolutely madly. So, what I did at the age of 16, I got committed. I got into a relationship. Just 10th standard खत्म हुआ, 11th standard में 2013 में I entered into a relationship with someone जो मेरे स्कूल से ही थी। हमने स्कूल में तो कभी बातें नहीं की थी, स्कूल ख़त्म होने के बाद हमारी बातें शुरू हुई, एंड वी instantly we knew कि yes, and we got into a relationship. It was very beautiful. Trust me, it was one of the best time of my life. मैं एक्चुअली बहुत छोड़ा था, वो मेरे को आज समझ आता है। बिकॉज एट दैट एज, इन दैट इंटेंसिटी, एट द एज ऑफ वॉट 18-19, आई स्टार्टेड फीलिंग कि येस, शी इज़ द वन, बस यही है जो भी है। आई स्टार्टेड टेलिंग टू पीपल अराउंड कि येस, she is going to be the one. In fact, there came a life when our relationship just got started. I still remember I keeping myself away from, like, I uninstalled Facebook, because I was like कि चलो Facebook का जो काम था उसने वो कर दिया. I met the person जिससे I wanted to meet, and now I don't need Facebook. I got myself off from WhatsApp. वो टाइम पे इंस्टा तो था ही नहीं. So I was like, this is the person, this is the only person I need, and I'll be done. I have my parents, I have my people around, and this is the only girl I think I should be knowing, I should be talking to, and she should be my only priority. So in that era, when people were switching to WhatsApp, I was wanting to stick to text messages, and I was absolutely enjoying those days. We had an amazing time. She was pursuing engineering, I was pursuing chartered accountancy. So 11th 12th का जो टाइम था, we knew we had time, we can enjoy, we can chill. And I was very sure कि जब 12th ख़त्म हो जाएगा, CPT IPCC, तब टाइम नहीं होगा उतना, तब the real challenge will start. But it was amazing. We fought, uh, we had great times, we had tough times, we had bad times, and we were seeing through it. And जैसे 12th ख़त्म हुआ, आई न्यू कि अब मैं वो टाइम नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज आई वॉज लाइक एब्सोल्युटली कमिटेड टू वांटिंग टू बी अ CA.
at any cost, and that was the biggest priority, because I knew I have some responsibilities and I need to, ensure that I don't get distracted. So I was so committed that there came a time where we were just not able to talk for months, meet for months. And of course, in that very age, when you have been with a person for so long period of time, and suddenly that person is not available, there are phases where you need it, and somehow the gap started coming, and it just kept increasing because of the tight schedules. I still remember one moment very clearly. So it was, हम भाईंदर में ही रहते थे. I used to stay in east, she used to stay in west. So what happened was, मैं वेस्ट में था, एंड आई वॉज एबल टू सी दैट पर्सन going in Activa with her family, and it was a moment which we were celebrating, like, oh, we are meeting what after, like, it was just one moment. वो बस एक नज़र था, एक दूसरे को देखा था, and we felt like, oh, such a relief. It was like a moment we cherished कि यार मज़ा आ गया, like इतना लंबा समय हो गया था, and वो एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखना, it was like, what a feeling, what a time, what a energy, what a view. And we just kept getting ourselves away from each other because of certain things, and eventually it got over. It had to, because of so many things which I think I would not like to speak about here. But the only thing which, the intent of creating this video is that I went through a heartbreak, we broke up, so many things happened, but till date, it's been 6 years, आज ही 6 साल हुए ब्रेकअप हो गए. Till date, there has never been a grudge like feeling in my heart. Yes, I can say that I felt the pain. It was tough. I thought she's the one. I'm going to spend my rest of life with her. It was tough to accept. It was painful. It was hurtful. But it was never, I got into that zone of, having a grudge. Because जितना मैंने उस रिलेशनशिप से सीखा है, आज भी, it made me better as a person. Because when I started, my mindset was so different, but when I was with that person taught me so much. That person changed my perspective, changed my mindset towards life. That person, जो एक नैरो माइंडसेट से आते हैं, वो ब्रॉड माइंडसेट उस पर्सन के साथ रहने की वजह से हुआ. बिकॉज इनिशियली व्हेन आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, आई फेल्ट लाइक, we dominate and she should be doing what I am saying. But eventually, with time, I started learning that you just allow the opposite person to be them, to do whatever they want to, and you just stand by their side and make them believe that मैं हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो बॉस, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा चाहे दुनिया में कोई और रहे ना रहे. This was the biggest learning which I had in that relationship. That relationship made me mentally stronger, because when you get into a relationship, initially everything is like very good, because two new person meeting each other, it has to be good. If they enjoy each other's energy or vibes, तो मज़ा आना ही है. बट जैसे जैसे यू कीप गोइंग फॉरवर्ड, इट बिकम्स चैलेंजिंग, डिफ़िकल्टीज, झगड़े होते हैं, फाइट्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो डिफ़िकल्ट बना देती है. एंड इन दैट फेज़, बिकॉज हम 16 17 18 19 20 साल के थे, झगड़े ज़्यादा होते थे, समझ कम होती थी, बट इट जस्ट केप मेकिंग मी स्ट्रोंगर. विथ एवरी फाइट आई वॉज बिकमिंग मेंटली स्ट्रांग. एंड वो जो एक किड था, जो एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर सेंसिटिव किड था, उसने उस 4 साढ़े 4 साल के रिलेशनशिप में अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया. उस रिलेशनशिप से मैं मेंटली तो स्ट्रांग बनाई, मैं एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो हुआ. मैं बहुत सारे फ्लॉज जो मेरे में थे वो इम्प्रूव हुए. आई गॉट एन insight towards life, एक अलग perspective towards life मिला. And that is the reason I never had said, never felt like saying anything bad to that person, because I owe her a lot, and she was the best life lesson. That relationship was the best life lesson which I could ever get in my life. And that is the reason I say कि I had a bad experience. I gave it all. Of course, she would have also given her all, but it ended in ways जो शायद दोनों को नहीं चाहिए था, but हो गया. But I have never stopped myself from falling in love again.
I never, had that hindrance ki, no, I will not love anyone again. I will not give my best. I will hate love just because I had an experience which shouldn't have happened. But my mindset is different. I take it very differently. मैंने जितना उससे सीखा मैं शायद कभी नहीं सीख पाता. And for learning all these things, you have to be in a relationship. I am at that phase where I'll not be afraid कि मैं प्यार में नहीं जाना चाहूँगा because कल को हो सकता है फिर से एक हार्ट ब्रेक हो जाए, फिर से ब्रेकअप हो जाए, फिर से ऐसा हो जाए कि थिंग्स माइट नॉट वर्क. वो तो हो ही सकता है, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉल इन दैट. इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ ड्रेनिंग, इट इज़ अ टेस्ट. बट ये टेस्ट तुम सिर्फ तभी जीत सकते हो जब दो इंसान एक दूसरे के साथ आ जाए, डिसाइड कर ले कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी बुरे दिन आ जाएंगे, चाहे तुम्हारे ज़िंदगी में चाहे मेरे ज़िंदगी में, वी विल नॉट गिव अप ऑन ईच अदर, वी विल नॉट गिव अप ऑन लाइफ, and things can work out. It is as simple as that. And that is what I have learned. And that is the reason I owe to that person a lot. And irrespective of whatever I experienced towards love, I can very well say that my belief on love is still intact. मुझे अभी भी लगता है इससे ज़्यादा पावरफुल, ब्यूटीफुल, म्यूराकुलस कुछ हो ही नहीं सकता. ना कुछ है ना कुछ हो सकता है. आई नो कि ये बहुत ब्यूटीफुल है. आई हैव टू अगेन एक्सपीरियंस लव. आई हैव टू गिव इट ऑल. I have learned from my dad that you have to be selfless, you have to be respectful, and you just have to ensure that that person is your priority, irrespective of whatever is going on in your life, whatever is going on in the world. You have to be there for that person whenever she or he needs you. It is as simple as that. And that is the reason मैंने एक शॉर्ट्स क्रिएट की थी. मैंने उसमें बोला था कि आई वॉन्ट टू से कि डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इन लव अगेन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे साथ कितना भी हॉरिबल एक्सपीरियंस पास्ट में रहा हो. और इसलिए मैंने बोला था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो क्रिएट करूँगा. आई हैव बीन थ्रू दैट. इट्स टफ, आई एम नॉट सेइंग इट. अलाउ योर सेल्फ सम टाइम, बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ. वो एक बाउंड्री मत खड़ी कर दो कि अब हम प्यार नहीं करेंगे. करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए. क्योंकि एज आई कीप रीइटरेटिंग फॉर आई गेस 100th टाइम, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, इससे ज़्यादा मिराकुलस, इससे ज़्यादा पावरफुल ना कुछ है, ना कुछ था, है, होगा. सो अलाउ योर सेल्फ टू फॉल इन लव. एन्जॉय दैट ब्यूटीफुल फीलिंग, दैट पावरफुल फीलिंग. और बस याद रखना कि वेन एवर यू आर इन लव, यू हैव टू बी सेल्फलेस, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, एंड यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप ऑन ईच अदर. Thank you. Hope after this video we reach 200 subscribers. I'm waiting for it. And that 200 subscribers, I'm going to celebrate it like, oh my god, कितना बड़ा number है, because it came after a lot of effort, and that is what you want to enjoy, right? That is what you want to celebrate. जब बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, and then you get something, it is worth celebrating. It should be celebrated. So I'm waiting for that. Thank you.